Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel Educational Tips. How are you all? I hope all of your all students are fine. Today's in this lecture I am going to share you about unit number 2 reading, and that our unit number 2 name is major organ system. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से organs हैं, what are the functions of these organs, like our human body is made up of many type of multi organs, and each organ has a different function. So now let's start our lecture. Please open your books and open the page number that is on 29. पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए. पेज नंबर 29 पे सबसे पहले फर्स्टली इट्स ऑल अबाउट इंट्रो ऑफ द चैप्टर एंड स्टार्ट विद द इंट्रो. Living things are also called living organism. The other name of the that they are saying that other name of the living things यानी कि जानदार चीज़ों का दूसरा नाम क्या है? Living organism. They are given this name because most living things have bodies composed of organs. Why the living things are also called living organism? Because their bodies contain many multi function organs. And organ is a part. And what is organ? An organ is a part of a body that perform a special task to help the organism life. They are saying that what is organ? It's a general question. What is an organ? An organ is such a type of such a part of your body that can perform only one task, and that task that organ given the name because of that special task, like your stomach digest food. Why as we know that our stomach digest food, and when our stomach digest food, no other organ can digest food. No other organ can even digest our food. Only organ can digest. Only an organ, the stomach organ can digest food. So we name the stomach because of its special function. Then that function is what? That function is to digest food. The task of an organ perform is related to one or more of 7 life processes. Some organs form a group to carry out a task to keep a living things alive. These organs are called organ system. And if the organ if many organ combines, यानी कि अगर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स कंबाइन हो गए, हर तरह का, जैसे स्टमक के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, when all these organs combine they form a what? Organ system in a flowering plant. Now they are giving the example of a plant. In flowering plant, the major organs are easy to see because they form separate parts that make up the external appearance of an organism. Now, in flowering plants, we are able to see their organs because they are on the upper side. They are on the upper side. They are not the internal. In the external part, our organs are in the internal part of the body, and in flowering plants, they are on the upper side. In animals, most of the major organs of the body are enclosed inside it and can't be seen. But in animals, they are same thing. But I am saying that in plants we can see their organ because of their appearance, because their organs are on the upper side, they are easily visible. But in animal, we can't see them because in the animals, our organs are in the inside of our body. Now, firstly, we are going to study about organs of flowering plant. I use the word flowering. We see the organs of a flowering plant. How? What are the organs? Now, they have 5 main organs in the body of a flowering plant. अब वो कह रहे हैं कि there are 5 main parts. There are 5 main organs in a flowering plant. What are they? These are roots, stem, leaf, flower, and bud. Also see the roots. We can also see the stem. We can also see the leaf. We can also see the flower and a bud. Now, each organ may be used for more than one task or life processes, and each organ of a plant body can be used for multitask. Number one is the first one is the root. The root anchors, यानी कि root हमारे यहाँ उर्दू में जिसका word use किया जाता है जड़ें, ठीक है ना? The root anchors the plant and take up water and mineral from the soil. The root of some plants, such as a carrot, stores food. Number one, the basic organ is the root. Firstly, the root appears, and after that the plant grows. And the basic function of the root is what? To absorb
water and minerals and nutrients from the soil. Firstly, the roots absorb food for the plant, water, minerals basically from the soil, and then it transported to the other parts of the plant body. And there are some type of plants that can also work to perform and the special function, that is to store food, such as a carrot. Carrot can store food in the roots, and because carrot is also a root, ठीक है ना, क्योंकि कैरेट जमीन में सॉइल के अंदर ग्रो करती है, तो इस वजह से कैरेट एक हम लोग ये भी कह सकते हैं रूट, इट्स पार्ट ऑफ रूट, ठीक है जी. नेक्स्ट सेकंड आ जाते हैं द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड एंड सपोर्ट द लीफ एंड द फ्लावर्स. सम प्लांट्स सच एज ट्रीज स्टोर्स फूड इन देयर स्टेम. नाउ दे आर सेइंग दैट द सेकंड ऑर्गन इज स्टेम. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? स्टेम, अब देखिए, रूट ने तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स absorb कर लिए, कहाँ से? सॉइल से. root absorb once the root absorb the water and nutrients and minerals from the soil, then these root transport the absorbed content from the soil into the stem. वो absorb जो उसने किया हुआ होता है soil से जो चीज़ें, वो फिर आगे stem के अंदर भेजती है. stem transport water and food and supports the leaf and flowers. Stem transports that water and food to the other parts of the plant body, like for the branches of the plant body, and also and the other function of the stem is to support leaves and flowers. Some plants such as trees stores food in their stem. There are some kind of plants that such as trees, एक बड़ा सा जो दरख्त होता है, ठीक है, this stores food in the stem. They don't store their food in the roots just like carrot. They stores their food in the stem. Now third organ is the leaf. The leaf produce food. What leaf produce? Leaf produce fruit, and food in some plants such as onion, food is stored in the bases of the leaves. अब in some plants they are saying that हम लोगों ने कौन कौन से पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि some plants store their food in the roots, some plants store their food in the stem, but onion like plants stores their food in the leaves. The swollen leaf bases make a bulb, ठीक है. उसके बाद फिर आ जाते हैं. Now the fourth organ is the flower. The flower contains the reproductive organ of the plant. That flower is a reproductive part that produce many other plants that produce their offspring, ठीक है. And the last is the bud, कली जिसको कह देते हैं हम लोग, ठीक है. The bud contains tiny new branches, leaf and flowers ready to grow. They are delicate structures, so the outside of the bud form a protective covering to prevent them being damaged as they start. अब देखिए, जब कोई भी कली होती है, एक छोटा सा फ्लावर की जो कली बनती है, उसके ऊपर ना पहले यूं करके लीव्स, पहले उसको अंदर फ्लावर को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है लीव्स ने यूं करके. कभी आप जब कली होती है ना, उसको आप लोग कभी देखिएगा, स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जो बर्ड होता है, उसके ऊपर ना लीफ कवर्ड होते हैं उसके ऊपर. वो क्यों होते हैं? ताकि वो फ्लावर जो इंटरनल पोर्शन है फ्लावर का, उसको प्रोटेक्ट कर सकें. और बर्ड जो हैं ये काफ़ी मतलब प्रोटेक्टिव पार्ट, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है लीव्स के थ्रू, ठीक है. और ये डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है. All the organs work together to keep the plant alive, and these all 5 organs work together to make the plants alive, to make them alive, so that it can grow and produce offspring. ताकि वो grow कर सकें, they grow and become a mature adult plant, and as a result they produce their offspring, i.e. they produce new plants, ठीक है. A closer look at our plant organ. Now we are going to discuss the deep structure of plant body. Number one is the first organ that we studied is number one is the root. The plant and the part of the plant we call the root is really made from a number of separate roots. प्लांट का वो हिस्सा जिसको हम लोग कहते थे रूट है, ये वो भी मुख्तलिफ तरह के छोटे छोटे रूट से, छोटी छोटी ब्रांचेस से मिलके रूट बना हुआ होता है. They form a root system, and these all the branches when combined they form a root system. There are two main types of
ऑफ रूट्स टाइप्स की 2 तरह की होती हैं. इन द टैप रूट सिस्टम अ मेन रूट कॉल्ड अ टैप रूट ग्रोज डाउनवर्ड व्हाइल अ लेटरल रूट ग्रोज अपवर्ड एंड साइडवेज. अब जो मेन रूट होती है ना वो अपवर्ड डाउनवर्ड ग्रो करती है, मेन रूट होती है. ठीक है, जबकि छोटी छोटी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो जो मेन रूट होती है उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं, जो कि ग्रो डाउनवर्ड करती है वाइल द लेटरल ग्रोज डाउनवर्ड एंड साइडवेज. जो कि एक मेन रूट होती है, जिसमें से एक कैरेट है, कैरेट एक टैप रूट है, वो एक मेन रूट होगी. और उसके इर्द गिर्द भी ये दोनों की दोनों रूट्स सॉइल के अंदर ही ग्रो करती हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर ही ग्रो करती हैं, लेकिन उस कैरेट के साथ साथ भी छोटी छोटी रूट्स, छोटी छोटी माइन्यूट सी रूट्स होती हैं. इन अ fibrous root system all the roots are the same size and can grow downward and sideways. अब fibrous root system के अंदर क्या होता है कि सारी रूट्स इकट्ठे ही ग्रो करती हैं और एक जैसी ही होती हैं, जस्ट लाइक दिस. ठीक है जी. और यहाँ पर इन लोगों ने देखा है वह भी है, ये देखिए ये fibrous root है इनकी, जो काफ़ी ज़्यादा जड़ें जिनकी होती हैं, और ये देखिए टैप रूट, और उसके बाद इसके साथ साथ छोटी छोटी इस तरह से जड़ें होती हैं. Roots can develop with special features to allow a plant to survive in a certain places. उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि रूट्स जो है उसके पास एक स्पेशल फीचर होता है जो कि प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करता है. फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स इन रेन फॉरेस्ट ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज इन द रूट्स हैंग डाउन इन द एयर टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम रेन ड्रॉप्स एंड मिस्ट. ठीक है, ऑर्चिड है वो एक रेन फॉरेस्ट के अंदर जब ग्रो करता है तो उसकी ब्रांचेस ट्रीज के ऊपर होती हैं ताकि वो और हैंग नीचे की तरफ होती है ताकि वो एयर को कलेक्ट कर सके, वाटर को अब्जॉर्ब कर सके, उसकी मॉइस्ट को, सॉइल के अंदर जो नमी होती है उसको मॉइस्ट कर सके. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर. आई होप तो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.